Assalamualaikum viewers, how are you all? Today I am sharing chicken and vegetable recipe, spaghetti recipe with you. Here we have all the ingredients that we have to put in that recipe. Here we have boneless chicken, one breast size, half medium size cabbage, 2 to 3 capsicum, 2 carrot large size, and here are one spaghetti packet, ketchup, 1 tablespoon vinegar, 2 tablespoon chili sauce, 3 tablespoon soya sauce, and black pepper 1.5 tablespoon, or 3/4 tablespoon of white pepper, 2 chicken cubes, 1 tablespoon of chili flakes, salt to taste. Sahi. Here I am boiling water for spaghetti, for boiling spaghetti. और आप सबको पता ही होगा स्पेगेटी कैसे बॉईल करते हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. I put 1 tablespoon salt, little oil in a water to boil spaghetti. Okay, now I am making its gravy. और इसके लिए first put some oil, not much, little bit oil. Okay, and one thing that I forgot to tell you in ingredients, that is ginger garlic paste. Put ginger garlic paste in it. Okay, now I am adding chicken in it. And the chicken change its color, and I will add vegetables in it. First I will add carrot, because it's the most hardest vegetarian in all of these. That's why I put carrot in it. Mix it well. Now I will add capsicum. Wow, what a colorful recipe it is. Seems delicious. In the last, I will put cabbage in it. And what I have to do? What I have to do now, I'm gonna add spices. First I will add chicken cubes.
And I will add all the spices. Vinegar. Here is the final look. अच्छा, आप सबको पता होगा. Now I am going to strain spaghetti that I boiled before. सबको ही पता होगा कि स्पेगेटी कैसे स्ट्रेन करते हैं, लेकिन फिर भी एज अ टिप बता दूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ में स्पेगेटी आपस में चिपक जाते हैं. तो स्पेगेटी और पास्ता फ्लेम ऑफ करने के बावजूद भी उनके अंदर हीट कैपेसिटी इतनी होती है कि वो हीट अप होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं. इसलिए तो स्ट्रेन करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ठंडा पानी का टैप खोल के उसके नीचे आप स्पेगेटी को अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर दें, वॉश कर लें, ताकि उनकी जो हीट कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाए. नाउ आई एम मिक्सिंग स्पेगेटी इन दैट ग्रेवी. Here is the final look of our spaghetti. Delicious and yummy, scrumptious.